Hello everyone. I hope आप लोग अच्छे हो and you people are practicing problems, learning concepts. For now, we will be solving this question and this is going to be mix of mechanics and electrostatics. In mechanics, we actually need to know basics of a spring mass system, two spring mass system motion in order to crack this. And also in electrostatics, we just need to very much basic of it. I mean how electrostatic force acts. Simply that. If we know these things, we can easily solve it. लेकिन देखो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने जाने से पहले वी शुड फर्स्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली क्योंकि कभी कभी क्या लगता है हमने ऐसा क्वेश्चन किया है चलो स्टार्ट करते हैं ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं राइट बट कभी कभी क्या होता है ना कुछ चीजें छूट जाती है while reading it and that actually leads us to wrong answer डन है so you should be very careful in reading the question. I mean, this habit you should bring while you are solving question in your room at your home, right? क्योंकि एग्जाम हॉल में वही हैबिट आप कैरी करके जाते हो अचानक एक दिन में चीजें चेंज नहीं होती डन है वट एवर चेंज हैज accumulated in your brain throughout the year throughout the months that will stay with you while you will sit in your examination hall, right? So I mean ऐसा मत सोचना कि चलो ठीक है अभी के लिए कर लेते हैं एग्जाम हॉल में तो हम ध्यान से पढ़ेंगे नहीं बाबा आदत बहुत बड़ी चीज होती है आदत क्या है ना वो तुम्हारे साथ जाएगी so you cannot leave it at your home for one day and then you can act differently no you will act who you are actually ठीक है तो तुम्हें लगता है ना तुम खुद को ठग सकते हो नहीं कर सकते वो हैबिट जाएगी ठीक है सो इसलिए क्वेश्चन को अभी से ध्यान से पढ़ने की आदत डाल लो चलो इस क्वेश्चन को मैं ध्यान से पढ़ूंगी सो टू ब्लॉक्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय a spring made of non conducting material so this is made of non conducting material चलो बढ़िया now the blocks are placed on a non conducting smooth horizontal surface so this surface is frictionless and also this surface is non conducting ठीक है okay the wall touching A is also non conducting यानी कि everything in the surrounding of A and B mass thing is non conducting or you can say everything that A and B is touching is non conducting कुछ ऐसा डन है block A carries a charge minus Q yes we can see there exists a uniform electric field of intensity E naught in horizontal direction in the entire region there is electric field in this region find the value of minimum positive charge Q that we must place on block B and release the system so that block A subsequently leaves contact with the wall. So क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम इस पे कितना चार्ज प्लेस कर सकते हैं सच दैट क्या हो दिस ए विल लूज कॉन्टैक्ट विद द वॉल राइट ऐसा क्वेश्चन हमने मैकेनिक्स में बहुत किया है आई हैव आल्सो पोस्टेड सो मेनी सच सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन वहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन ना करके वी हैव गिवन इट सम एक्सटर्नल पुश and then we were asked to talk about maximum extension and all that then we have done it so यहाँ पे simple difference ये E naught का ही है that I will explain further first let us finish the question force constant of a spring is K neglect interaction between charges on the blocks so block के बीच में जो charge का interaction है देखो इसको पढ़ना बहुत जरूरी था क्योंकि अगर हम इसको नहीं पढ़ते तो हमारे सिस्टम में हम एक्स्ट्रा फोर्स को काउंट करते विच वॉज के क्यू स्मॉल क्यू बाई दिस डिस्टेंस का स्क्वायर हमें उसको निग्लेक्ट करना है तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो गया ठीक है वी हैव टू निग्लेक्ट इट अब देखो ये क्वेश्चन कैसा है जैसे देखो याद करो हमारे पास टू मास सिस्टम होता ठीक है कुछ ऐसा एंड देन देर इज अनदर ब्लॉक ए दिस इज बी व्हाट वी डू बेसिकली लेट्स से हियर इज द वॉल और ये वॉल को टच किए हुए डन है अब यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि दिस इज नॉट ए इज सिंपली नॉट टचिंग द वॉल रादर इट इज गेटिंग प्रेस्ड अगेंस्ट द वॉल ये कुछ ऐसा है कि सपोज कर लो तुम यहाँ पे खड़े होकर ए को इधर की तरफ धक्का देकर खड़े हो सो ए इज एक्चुअली गेटिंग प्रेस्ड अगेंस्ट द वॉल हाउ क्योंकि यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पे नेगेटिव चार्ज है यू नो दैट ऑन नेगेटिव चार्ज फोर्स एक्ट्स opposite to the direction of electric field so because of this electric field present in the region force on A is getting acted in this direction QE. So basically this is here pressed against the wall not naturally normally डन है सो इसको हमने धक्का देकर इसके कांटेक्ट में रखा है कुछ ऐसा है यहाँ पे अब देखो अगर नॉर्मल केस होता हम क्या करते हैं बी को इधर की तरफ हाथ से पुश करते हैं या फिर इसको कोई इम्पल्स देते हैं उस इम्पल्स की वजह से बी विल start moving and if it is pressed against the wall it will when this A will start moving when the force arising in this spring will be equal to or will be able to nullify this pressing effect
राइट, क्योंकि तुमने इसे प्रेस करके रखा हुआ है। अगर स्प्रिंग उस प्रेसिंग के बराबर से इधर खींचता है तो ए विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन, राइट, समथिंग लाइक दिस। सो यहाँ पे बी को हमने इम्पल्स नहीं दिया, एक्सटर्नली कोई एजेंट आकर उसको यहाँ से खींचकर कहीं दूसरे डिस्टेंस तक नहीं ले जा रहा इन ऑर्डर टू जनरेट टेंशन इन द स्प्रिंग, राइट। व्हाट वी आर डूइंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमने इसको चार्ज दे दिया, और जैसे ही हमने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया है, व्हाट विल हैपन, ऑन प्लस क्यू चार्ज फोर्स विल एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो ऑन बी फोर्स विल स्टार्ट एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। सो इट विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन। Now, because of this force, tension will arise. And because of this force, first B will start moving. Tension will arise. B will keep on moving. Tension will keep on increasing. Done it? Increasing, increasing, increasing. And at a point, tension should come equal to this pressing effect. ठीक है, क्योंकि अगर आप A की पूरा FBD लिखो, डन है, सो इन दिस साइड फोर्स एक्टिंग इज हाउ मच, क्यू ई नॉट, एंड वॉल से प्रेस्ड है तो वॉल इसको नॉर्मल रिएक्शन ऐसे दे रहा होगा, लेट्स से दिस इज n1, डन है, and then mg downward normal reaction because of this surface n2 will be equal to mg, no question in there because vertically there is no disturbance motion sort of thing, so n2 mg, but यहाँ पे अगर आप देखो initially n1 is equal to how much, this is q e naught, right, and when this spring force is acting, this will act in this sense. Let's say Kx. And let's say at extension x naught in the spring, what is happening? This is able to leave the contact with the wall. So कॉन्टैक्ट को लीव कर रहा है मीन्स कॉन्टैक्ट फोर्स जीरो हो जाएगा, किससे लीव कर रहा है, वॉल से, सो वॉल का कॉन्टैक्ट फोर्स विल बिकम जीरो, n1 विल बिकम जीरो, and at that point, I mean, you will say that QE naught has become equal to KX naught. So, I mean, ये काफी easy feel करेगा. It will start moving towards right afterwards. Done it? So this is this. कहने का मतलब ये है, we need to bring out extension in the spring equal to QE naught by K because of charge Q getting placed over here. So what should be the minimum value of Q? So minimum value देखो आप यहाँ पे अब B के मोशन को फिर से एनालाइज करो. B क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, मूव करके यहाँ आया, डन है, सपोज कर लो उस टाइम पे यहाँ पे एक्सटेंशन x नॉट है. नाउ मिनिमम वैल्यू ऑफ q इस तरह से होना चाहिए कि एट दिस पॉइंट इट हैज कम टू रेस्ट, क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू ही देना है. आवर टास्क इज, आवर गोल इज टू जनरेट एक्सटेंशन x नॉट, डन है. अब उसके लिए यहाँ पे इसके पास वेलोसिटी जीरो हो जाए उससे हमें मतलब नहीं है, डन है. अगर मिनिमम चार्ज की बात नहीं होती, लेट्स से वी आर गिविंग इट वेरी मच अमाउंट ऑफ चार्ज, तो इस पॉइंट पे भी इसके पास कुछ वेलोसिटी होता, एक्सटेंशन इज एक्स नॉट, एंड इफ इट हैज वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, ए विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन, बी इज स्टिल मूविंग इन दिस डायरेक्शन. सो आफ्टरवर्ड्स इट विल बिकम अ क्वेश्चन ऑफ टू चार्जेस मूविंग इन द सेम, two masses moving in the same direction, this one with the higher velocity, this one with the lower velocity initially, right? So this spring mass system we have dealt with a lot, बट यहाँ पे हमें टॉक करना है अबाउट मिनिमम चार्ज गेटिंग given to B in order to move this charge A. So we will give it charge in such a way that it is able to cause extension x naught. So as it will move towards right, its velocity will keep on decreasing, extension will keep on increasing. We can say for minimum value of charge, velocity will become zero of this thing, and then extension will be x naught. ठीक है, तो क्या किया हमने यहाँ पे, अगर आप ध्यान से चेक करो तो I mean how we can relate x naught with this q plus q charge getting given to this one, how we can deal with this, how we can calculate it, क्योंकि हमें क्या निकालना है, देखो हमें निकालना है q का वैल्यू, डन है, कैपिटल q का वैल्यू. नाउ हाउ वी कैन ब्रिंग दिस कैपिटल q इन द पिक्चर, सो लेट अस गो अराउंड दैट. थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके सोचना कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट ये जो आई मीन प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस होता है ना, वन गो में नहीं देखना चाहिए. तुम्हें जहाँ पे लगे कि तुम्हें सोचने की जरूरत है, यू शुड स्टॉप द वीडियो, यू शुड थिंक अराउंड इट. सो नाउ आई एक्चुअली वांट यू पीपल टू स्टॉप द वीडियो और पॉज इट एक्चुअली, एंड देन थिंक अबाउट इट. उसके बाद आप खुद से बना लो, देन यू कंटिन्यू विद द वीडियो, ठीक है. सो आई होप आप लोग कुछ ना कुछ कंक्लूजन पे जरूर आए होंगे. चलो अब मेरे साथ कर लेते हैं, आई मीन लेट अस डू इट टुगेदर. सो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, बी को आपने चार्ज दिया and because of that it started moving in this direction. So why it started moving in this direction? Because
electric force is acting. And if extension x naught, this A has started moving, it means why extension x naught happened? Because B has moved by distance x naught. So basically on B there has been work happening because of this electric force. So work done by electric force अगर आप लिखोगे तो force acting is q e naught, and displacement is x naught in the same direction as that of force, right? So f dot ds करोगे, I mean cos theta will become 1, theta is 0. So q e naught into x naught. So how much is the work done? Q E naught into X naught. And this work done basically, electric force is doing work because of which it is gaining velocity. But that velocity is again getting retarded by the spring force. Done it? So whatever velocity is it is gaining because of electric force doing work, that velocity is getting again retarded by this spring force. कहने का मतलब kinetic energy of B is then getting transferred to a spring as potential energy, right? So finally, I mean maximum kinetic energy that this B can get upon traveling x naught distance under the influence of electric force will be equal to this much, right? But at the same time, simultaneously, this spring force is acting. So what it will do, it will basically convert this kinetic energy into potential. So if it has stopped after traveling this much distance, it means a spring has done enough work to stop it, right? So basically, kinetic energy that would have been gained by this B if there was no spring present is now getting basically consumed by this spring force, you can say, or this spring thing. Done है? So basically whatever kinetic energy ये gain करता or whatever is the work done by electrostatic force will get stored in the form of potential energy. क्योंकि finally block को हम क्या ले रहे हैं, rest पे ले रहे हैं. So whatever electrostatic force, whatever work it has done is getting stored in the form of potential energy of a spring. So potential energy of a spring will be equal to half k x naught का square, and this is equal to q e naught x naught. ठीक है, तो चलो यहाँ से कुछ x naught से कुछ तो रिलेट होगा. चलो इसको देखते हैं. So एक x naught कट हो जाएगा यहाँ से, and x naught is equal to how much now? This is 2q e naught by k. And also we have calculated x naught in terms of q e naught by k. So let us equate these two things. Okay? So you will be writing q, small q e naught by k is equal to 2q e naught by k. So k will get cancelled, e naught cancelled. Q is how much? Q by 2. So this much amount of charge you need to give it to P. In order to, this is the minimum value of charge that you can give. इससे भी ज़्यादा दोगे तो भी कोई problem नहीं है. Then also x naught extension will occur, but at that point this B will have certain velocity, because if charge is greater than this one at that point of time, work done by electrostatic force will be greater than this one, right? Done it? Because I mean Q has increased, so basically work done is greater than this one. Done it? So if it is greater than this one, then still with this block B there is some kinetic energy left. Done it? So कुछ ऐसा होगा. I hope you have understood this question. You are able to imagine things. You are able to analyze the question, and you are able to get all the concepts involved in here. But if you have any doubt anywhere, you can always let me know in the comment section. Thank you. Take care of yourself. Bye bye.